Hi everyone, today we are making a dream catcher. To make this dream catcher, you need a wooden circle like this, which you'll get for that embroidering thing. You can use that if you have the old thing. Don't need to buy a new. If you want, you can. That is another thing. Take a woolen and wrap it as I had shown in my previous video. As I had wrapped the bangle from it, you have to wrap this wooden circle. Once you're done covering the circle, you have to tie at least 4 to 5 knots and then take another woolen and tie a knot on it. Now you have to give the woolen the shape of a hexagon by tying a knot in each corner. I have kept here four fingers of mine. The distance between the one knot to another is my 4 fingers. If you want, you can make it large. Tie the knots tightly so that your hexagon will come in a proper shape and it will be tighter. It should not be loose. You have to be tying the knot by making a shape of a hexagon, and once you're done with it, tie a proper knot on it, and then I will show the second process of making a dream catcher. Now you can see your hexagon will be ready. So between each corners there is a space, so you have to put the woolen inside and remove it. You can see each corners are getting into a triangular shape. Now you have to repeat the process by putting the thread between every triangle, and you have to stretch it out so that your triangle is not loose. It will be better if we roll the woolen on some paper and then start doing this process, so that you should not be clearing the tangles in between making this process. But I have messed it up, so I am doing it properly and advising you guys, so don't do that. And in my previous video I was speaking in Hindi and English. Many of you liked it, and my last video was more than 300 people had a view on it. More than 300 people saw it, but I request you all to subscribe as well. Well, just views were more. Thanks for it. It means a lot. But please do subscribe my channel. पिछले वीडियो में मैंने हिंदी में बात की थी और उस वीडियो को बहुत सारे व्यूज़ आए थे. अगर आपको पसंद आया मेरा हिंदी में बात करना तो इसके लिए धन्यवाद. मैंने अब ये सोचा है कि इस वीक हमारा गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस में मैं हर दिन वीडियो या अल्टरनेट डेज में वीडियोस बनाऊंगी. रिपब्लिक डे, अल्टरनेट डेज का मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन मैं वीडियोस बना के डालूंगी या रोज़ ही बनाऊंगी, वो डिपेंड करेगा. पर मैं हिंदी में वीडियो, उसमें हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हिंदी में बात करूंगी. और आशा करती हूँ कि आपको मेरा हिंदी में बात करना पसंद आए और मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. और कमिंग बैक टू द वीडियो, we have to tighten the circular shape in between. When you're doing the center of the circle, you have to do it very carefully because your woolen might not enter into the holes in between, or the space in between. You have to pull it out properly and tie 2 to 4 knots and cut the extras. And now we are into the final process of making this. और मैं अभी हिंदी में बात करूँगी. हमें इस ड्रीम कैचर के हैंगिंग के लिए धागा चाहिए होगा वुलन का, जिसे हमें एटलीस्ट 1 मीटर का एक हैंगिंग होगा. 1 मीटर का होगा, जिसे हमें 4 हिस्सों में डिवाइड करके वहाँ पे गांठ बांध लेनी होगी और उसके अंदर हमें मोती लगा देना है. और उस मोती के बाद में हमें चोटी जैसे डालते हैं वैसे हमें गूंदना होगा. जब ये गूंद के हो जाए तो ऐसे 4 हमें बनाने हैं, जिनके बीच में हमें ऐसे भी लटकाने हैं लटकन जिसमें सिर्फ मोती ही लटके हुए हैं, गूंदा हुआ ना हो. वैसे करके हमें 4 1 5 अलग, और जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप बना सकते हैं, जैसे आपको डिज़ाइन चाहिए होगा. और मैंने लास्ट में सिर्फ प्लेन लटकाए हैं, जिसमें सिर्फ मैंने एक ही मोती ऊपर की तरह लगाया है. ऐसे करके हमें इन्हें बराबर से लटका देना है. लटका के हमें ब्रश से उसे अच्छे से कोम कर देना है और उसे ट्रायंगुलर शेप में कट कर देना. जब ट्रायंगुलर शेप में कट कर दें तो ये आपका तैयार हो जाएगा. एंड आई हैव टोल्ड इट अर्लियर दैट दिस रिपब्लिक डे वीक आई एम गोना मेक वीडियोस अल्टरनेट डेज. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to my channel. Thank you.